Hello my dear students, good afternoon. Welcome for the next lecture. Today we will do a topic in which electric dipole is kept in a uniform two-dimensional electric field. The question is that what happens when an electric dipole is kept in a uniform two-dimensional electric field? तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको हम टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं. तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P vector equals to 2aq, equation number 1. Let us consider electric dipole or dipole moment is kept in a uniform electric field E vector. तो मान लेते हैं एक डाइपोल है, उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में रखा गया. अब क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट whose magnitude as well as direction is constant throughout the space. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहते हैं, एक स्पेस में यूनिफॉर्म एक ही डायरेक्शन में रहते हैं और कांस्टेंट रहती है. और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस and equally spaced electric field lines like this. Say this like this, or you can say like this. कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, but keep in mind here direction is this way and the spacing between this is also यूनिफॉर्म. इनके बीच में जो गैप है वो भी बराबर है, इनकी थिकनेस भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है. तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से वहां जा रही है. दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नीचे से कहां जा रही है, ऊपर जा रही है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वली स्पेस्ड पैरेलल रेज. इक्वली स्पेस्ड पैरेलल रेज. इट इज टू डायमेंशनल. 3D में भी ले सकते हैं, there is no problem in that. तो एक स्पेस है फॉर एग्जाम्पल, तो लेट अस कंसिडर दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 3, 4, 5, 6. This is say for example uniform electric field lines is going from here to there. And let us consider this is E vector. This is E vector uniform. Its magnitude is same and direction is say upwards. Let us consider electric dipole is kept here. So let us consider say this. Let's draw one. So this is an electric dipole. इसका चार्ज कितना है? माइनस क्यू है, और इसका कितना है? प्लस क्यू. और ये सेंटर में ले रहे हैं. सी है सेंटर में हमने ड्रॉ किया है कि दिस लाइन इज पासिंग टू द सेंटर. इट्स नॉट नेसेसरी, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर तो मैंने ये लिया सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. And what is this vector? ये तो पता है आपको. what is this vector? P vector. तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट 2aq है, उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. And let at any instant the angle be, उसको हटा देते हैं. Let at any instant जब रखा है तो उस वक्त उसका एंगल कितना था? Let at an instant theta is the angle between
P vector and E vector. मान लेते हैं जब हमने इसको रखा उस टाइम इसमें एंगल कितना था, ये P वेक्टर है और ये E वेक्टर है, दिस एंगल इज से थीटा, तभी मैंने ये सेंटर से ड्रॉ की है लाइन सो दैट यू कैन मेक एन एंगल थीटा इजीली विद P वेक्टर. ऑल दीज एंगल्स आर थीटा, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो जब हमने इसको रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जैसे ही रखा उस वक्त रखते ही उस वक्त at that instant what was the angle? It was theta. P vector और E vector. This is E vector, this is P vector. इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा. तो let at an instant theta is the angle between P vector and E vector. Now what happens? Now since you know this charge is kept in electric field and this charge is also kept in electric field, so this charge will experience a force. Now in the previous lecture I have told you there is an expression F equals to Q, physical significance of the electric field and the force, you can say. When charge Q is kept in an electric field E, it experiences a force given by F equals to QE. अगर Q positive है तो the force is in the direction of electric field, और अगर Q negative है तो the force is in the direction opposite to the electric field. See, we have done this thing. So see, the force on say plus Q charge, plus Q, say it is F plus. Force on plus Q charge क्या होगा? Say this is plus Q charge. I am writing F plus here. What it will be? It will be plus QE. See, plus Q charge. If it is kept in electric field, so this force is plus QE. What's the direction? This way. This is the force because of the positive charge, or you can say force on the positive charge because of the electric field. Similarly, the force on minus Q charge, F negative, is equals to minus QE. I mean to say this is the force. This is the force on the negative charge. This is the force on the positive charge. This is the force on the negative. You can take F1, F2, whatever you want to take. But I have taken F positive, the force experienced by the positive charge in the electric field, and F negative, or the force experienced by the negative charge in the electric field. अब कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये ऊपर क्यों जा रहा है, इधर क्यों आ रहा है. मैंने पहले बताया अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चलता है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, द पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ चलता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलता है. दिस इज नेगेटिव चार्ज या अगेंस्ट चल रहा है. अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो यू कैन थिंक, मैंने पीछे लेक्चर्स में बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलती है. पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है. तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जा रही है तो यू कैन कंसीडर ये जो साइड है, ये वाली साइड वो क्या होती होगी, पॉजिटिव होती होगी, और ये वाली साइड जिस तरफ जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होती होगी, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन अ स्पेस. तो अगर ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव से कहां जा रही है, नेगेटिव. तो अगर ये पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. दिस इज द फोर्स बाय व्हिच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड. दिस इज F नेगेटिव माइनस QE. ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव से क्या होगा, रिपेल, और यू कैन से ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव से क्या होगा, अट्रैक्ट. तो ये चार्ज कहां जाएगा, इस साइड. द पॉजिटिव चार्ज विल मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. और नेगेटिव चार्ज विल मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सी द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज एंड फोर्स ऑन द नेगेटिव. नाउ व्हाट इज द टोटल फोर्स? What is the total force here? What is the total force? See, F total. What is F total? F total is F positive plus force on negative. Right? It is plus QE vector and minus QE vector. Look at the answer is 0. The total force is 0. So what is the force here? F total is 0. Although the force is 0, these two forces are equal and opposite in magnitude. Therefore, the total sum is 0. But these two forces are equal and opposite, but they are not in a same straight line. See, this force is upwards
This is downwards. इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है. दोनों एक ही लाइन में नहीं है, दोनों इक्वल हैं, दोनों ऑपोजिट हैं, बट these two are not in a same straight line. It means they are forming a couple. They are forming a couple. Now what is a couple? Couple is like this. Say for example this is a stick. तो अगर आप एक फोर्स इधर लगाएं और एक फोर्स इधर लगाएं, इसे कपल कहते हैं. कपल मीन्स पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ओवर सम डिस्टेंस. वो फोर्सेस अगर आपस में कुछ डिस्टेंस पे किसी चीज पे एक साथ लग रही हो उसे हम कपल कहते हैं. तो सी हियर, so these two forces are equal and opposite and acting over this dipole. तो क्या होगा? They will not cancel out. In fact, they will produce a torque. Torque means turning effect. ये इसको इधर खींचेगी और ये इसको इधर खींचेगा. Just like this here. अगर ये dipole है, this is dipole, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, तो ये वाली साइड कहाँ जाएगी? ऊपर. और साइमल्टेनियसली वाली साइड कैसे आएगी? नीचे. This is downwards, this it will move upwards. So क्या हो जाएगा? ये ऐसे टर्न करेगा इस साइड और ये ऐसे टर्न करेगा. This is called torque. This is torque. Torque. See torque. Now the question is that what will be the magnitude of the torque? So what happens if a dipole, electric dipole, is kept in a uniform electric field? The total force is 0, but these two forces produces torque in the dipole. Torque means turning effect of these two forces. These two forces produce a turning effect. Torque turning effect होता है, अपने 11th में तो पढ़ा हो. So what is the expression of torque? Now see, expression for torque. So these two forces, you can write these two forces. These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. Opposite in direction and not in a same straight line. Not in a same straight line. These two forces are equal in magnitude. You can say opposite in direction, but not act in a same straight line. एक ही same straight line पे act नहीं कर रही है, किधर कर रही है, किस line पे कर रही है, किस line पे कर रही है. Therefore, they produce a turning effect. Turning effect in the dipole. What is turning effect called? That is torque. T-O-R-Q-U-E. Torque in the electric dipole. So when these two forces are equal and opposite, but they are not in the same straight line, they are equal, opposite, but they don't act in the same straight line, therefore they produce a torque and it will turn the dipole. Now what is the magnitude of the torque? Let's do. So before rubbing it, see here, हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया, P equals 2AQ. इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. In my figure, electric field is moving from down to up. इसको ऐसे रखा है. इसमें दो फोर्स एक्ट करते हैं, प्लस QE और माइनस QE, दोनों कैंसिल हो जाती हैं, टोटल फोर्स 0 होती है. बट ये दोनों फोर्स कैंसिल होने के बावजूद भी they produce a turning effect, क्योंकि these two forces are acting over different lines of action. So torque is not 0 here. Torque is not 0. Torque is there. So let's find the magnitude of the torque. What is the magnitude? Torque is equals to, the magnitude of the torque is equals to, see here, magnitude of the torque is given by this torque mod either force that produces torque, see, either
force that produces torque, दोनों में से कोई एक फोर्स जो टॉर्क को प्रोड्यूस कर रही है, into couple arm, into couple arm. This is one way. There are so many ways to explain the expression for torque. This is one of the way. अब दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो जो टॉर्क को प्रोड्यूस कर रही है, force into couple arm. So what is the force? QE. You can take anyone, either plus or minus, but mod में करना है आपने. Question is, what is couple arm? Couple. This is a couple. And what is a couple arm? It is a perpendicular distance. Perpendicular distance between the two forces. Between two forces that produces torque. इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कपल आर्म कहते हैं, जो कि टॉर्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं. कौन सी फोर्सेस जो टॉर्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं? नो से these are two forces, that is be A point, this is say B, this is O. इसकी लेंथ कितनी है वो तो मालूम है आपको, it's 2A. A from here, A from that side, it's 2A. This is not a perpendicular distance. Why this is not a perpendicular distance here? This is not an angle 90 degree, तो है नहीं है, ये भी 90 degree नहीं है. तो आप इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें. This is the line of action of this force. इसको यहीं रहने दें. See here, this is now the perpendicular distance. Say this, say let it be C. This is the couple arm. This. So here it is. You can write QE mod. What is the couple arm? AC. AC is the couple arm. Now see, what is AC? Let's find it. What is theta? Theta is the angle between E vector and P vector. See, theta. If this is theta, so this is also theta. Check it. Alternate angles. Now what is sin theta from this figure? Check. What is sin theta? In this right triangle, this is a right triangle. ACB is a right triangle. What is sin theta? Perpendicular upon hypotenuse. So it is AC is the perpendicular and hypotenuse is AB. Sin theta. What is AC? हमें तो AC चाहिए. What is AB? A to B. It's twice of A. So what is AC equals? Twice of A sin theta. Twice of A sin theta. So let's put it in. It's QE twice of A sin theta. See, I'm not putting any more but now. Everything is clear. Rearrange the things. 2AQ E sin theta. 2AQ E sin theta. What is 2AQ? It is PE sin theta. This is the expression for torque. Torque equals to PE sin theta. So in scalar form, what is the expression for torque? It is PE sin theta. This is torque. See, this is torque like this. Torque used for torque. Therefore, the expression for torque is equals to PE sin theta. What is 2AQ? You know, 2AQ is equation number 1. It is P. It is PE sin theta. This is the expression for torque. And it's the magnitude of torque. Now, if you want the vector form, so what will be the vector form of this torque? This is the vector form. Say here, P cross E. P cross E. Vector form is given by P cross E. Now, why it is P cross E? Again, it's a cross product. See here, P E. P E. See here, for example, like this. I'm taking a table. Say this is P vector. This is a E vector. So what is the expression for? This is theta. This is the expression for torque. P से E की तरफ आप हाथ को sweep करें like this. It gives torque. In this figure, it is like this. P से E की तरफ right hand को sweep करें. Thumb gives the direction of
टॉर्क, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. P से E हाथ को स्वीप करो, राइट हैंड A क्रॉस B जैसे होता है. इन 11th क्लास यू हैव स्टडीड दिस. इट इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल आल्सो देयर. अगर आप स्क्रू को ऐसे करेंगे तो क्या होगा? इट विल कम आउट. इफ यू ट्विस्ट द स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज, the screw will come out. So here also the direction of torque is like this, and the moment of this dipole is like this. It will rotate like this. The torque, the expression of torque equals to P cross E. Now let's do some corollary about it based over this formula. Now what happens if theta is 0 degrees? If theta is 0 degrees, now see here. If theta is 0 degree, what is the torque? PE sine 0. That is 0. No torque. Torque will be 0. Why? See the diagram again. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और डाइपोल को हम कैसे रख रहे हैं? डाइपोल को भी हम ऐसे रख रहे हैं. माइनस क्यू नीचे है, प्लस क्यू ऊपर है. तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या है? पी वेक्टर की ऊपर की साइड है. दिस इज डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर. व्हाट इज द एंगल हियर? थीटा इज हियर 0 डिग्री. व्हाट इज टॉर्क? 0. ये नहीं रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक फोर्स इसको ऊपर खींच रही है, एक फोर्स को नीचे खींच रही है. It will remain straight. It will not turn. And this is a stable equilibrium. Stable equilibrium. In the previous lecture, I have told you about stable equilibrium and unstable equilibrium. This is a stable equilibrium position. So in stable equilibrium, tau is 0. And what is theta? Theta is 0. Second corollary. If theta is 90 degrees, if theta is 90 degrees, what happens? If theta is 90 degrees, second, if theta is 90 degrees, means dipole is kept like this and the electric field is like this. What is the theta? Theta कितना है इस वक्त? सेंटर से ले लो. Theta is 90 degrees. So what is tau? PE sin 90. Sin 90 is 1. The tau is PE, and it is maximum. Obviously, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और हम उसको ऐसे रखेंगे 90 डिग्रीज पे रखेंगे, तो ये सबसे ज्यादा जोर से टर्न करेगा लाइक दिस, क्योंकि उस टाइम थीटा कितना है? 90, एंड tau is maximum. Now, third corollary. If theta is 180 degrees, see the figure once again. Third corollary. If theta is 180 degrees, so what is tau equals to? PE sin 180. What is sin 180? It is again 0. Now see the figure. What is this? This is the direction of electric field. Now अभी डाइपोल कैसे रखे? डाइपोल ऐसे रखे, बट यहां पे माइनस साइन है. माइनस क्यू हियर, प्लस क्यू हियर, एंड जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो पी वेक्टर इस साइड है. ये क्या जा रहा है? ई वेक्टर. ये क्या है? पी वेक्टर. व्हाट इज द एंगल? थीटा इज 180 डिग्रीज. इट विल नॉट टर्न. इस केस में माइनस क्यू पे फोर्स कैसे होगी? ऐसे, और प्लस क्यू पे कैसे होगी? ऐसे. बट दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये टर्न कर जाएगा. इट विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम जो पिछला फर्स्ट पॉइंट था, व्हेन थीटा इज 0 डिग्रीज,
That was a stable equilibrium. और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, उस टाइम फोर्स इधर थी और एक फोर्स उधर थी. थोड़ा सा अगर हम डिस्टर्ब करें इसको इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड, इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी पोजीशन वापस आ जाता है. बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस नहीं आ पाता. So we have done 3 corollaries. When theta is 0, it is stable equilibrium. When theta is 90, the torque is maximum. And if the initial angle theta is 180 degrees, starting में ही अगर ऐसे रखा है, तो again torque is 0, but that is an unstable equilibrium. उसके बाद अगर कोई बोले कि ग्राफ ड्रॉ करो, tau versus theta ग्राफ ड्रॉ करें, what is the graph of that? So it's very simple. It is sinusoidal graph. See here? It is just like the sine curve, like this. This is tau, this is theta. Tau versus theta graph. If theta is 0, this is theta. Theta is 0 degrees, tau is 0. Theta is 90 degrees, pi by 2 अगर हो, it is maximum. Tau is here PE. If theta is 180 degrees, it is again 0. If it is 3 pi by 2, obviously you do it, tau will be minimum minus PE, or you can say maximum in opposite direction. If it is 2 pi, again the tau is 0. So this is the graph of tau equals to PE sin theta. These questions are asked in competitive exams. So what's the conclusion? अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टोटल फोर्स 0 होगी, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा. और टॉर्क का एक्सप्रेशन कितना होगा? PE sin theta. It will turn like this. There will be no translatory motion. There is only rotatory or torque type motion because of the torque. Now the question arises, if this field is not uniform, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो क्या होगा? अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो और इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? सेम. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, यहां पे फॉर एग्जांपल डायरेक्शन तो वही रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है? स्ट्रॉन्ग, और यहां पे क्या होती है? वीक होती है. तो इफ यू कीप अ डाइपोल हियर, तो यहां पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कम होगी, फोर्स कम होगी, और ये फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी. नाउ टर्न तो अभी भी करेगा, बट एफ टोटल इज नॉट 0. टोटल फोर्स 0 नहीं है. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स भी कम है. इस साइड ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू, सेम फिगर. लेकिन क्वेश्चन है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी स्ट्रांग है. सी, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय डेंस लाइंस, क्लोजली पैक्ड लाइंस. यहां थोड़े दूर है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगी और यहां पे कम होगी, और टोटल फोर्स का सम 0 नहीं होगा, और टॉर्क भी 0 नहीं होगा. टॉर्क इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. टोटल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0. It means it will turn. रोटेटरी मोशन भी होगी, साथ में ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी, क्योंकि फोर्स इज नॉट 0. इट विल टर्न एंड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये टर्न अपनी जगह पे टर्न नहीं करेगा, ये टर्न भी करता जाएगा और साथ में मूव भी करता जाएगा इन फेवर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज स्ट्रॉन्ग. इस केस में ये सिर्फ अपनी जगह पे टर्न करेगा, मूव नहीं करेगा कहीं. देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन इन दिस. हियर वी हैव बोथ torque as well as force. There is a translatory motion also and a rotatory motion also. This is in case of non-uniform electric field. So this is the expression for today's lecture. Tau equals to PE sin theta, and in vector form we have tau equals to PE. किसी बच्चों को सकता है ये समझ में नहीं आया तो he can study 11th class A cross B product. That is mod of A, mod of B, sin theta and n cap. Okay, I will explain another method for finding the torque. Another way.
It is a little bit tough, but the most accurate one. See, टॉप निकालने का एक और तरीका जो सबसे एक्यूरेट तरीका है लेकिन थोड़ा सा slightly tough. Now what is torque? Torque is turning effect of the force. Now let me explain. Say this is torque. This is one force. So we'll write force into d1 plus another force into another distance. Say for example this is F1 force. इस force का इस axis of rotation से perpendicular distance कौन सा है? So this is the perpendicular distance. For example हम इतना portion करते हैं. So this is 90 degrees. If it is theta, this is also theta, vertical opposite angles. And this distance is say b1. This one. So this is F1. So what is F1 here? QE minus QE. We are taking mod. What is D1 here? If it is theta, this is 90 degrees. What is sine theta? In this triangle, AOCK. In triangle AKO, what is sine theta? Perpendicular upon hypotenuse. It is D1 upon A. So this is D1, this is A. So what is D1 here? A sine theta. So right here D1 equals to A sine theta. Now then another force. So this is another force F2. So इस force का इस axis of rotation से what is the perpendicular distance? Draw perpendicular like this. So this point is say M. So this is D2. This is the perpendicular distance D2. Again in triangle. Which triangle? OMB. OMB. What is sine theta again? This is theta. D2 upon this side A. Perpendicular upon hypotenuse. So what is D2 equals to? A sine theta. So D2 is A sine theta. So we will put the values of D2 here. What is F2? Mod of F2. What is mod of F2? It is QE. What is D2? A sine theta. This is the exact way to find the torque because two forces are producing torque. This force and that force. So इस force का axis of rotation से distance लें और आपस में multiply करें. This is called moment of this force about this axis. F1 D1. What is the moment of this force about this point? Say F2 D2. F2 D2. So here in this expression we are involving both the forces. This force and this distance, this force and this distance. Now see, QE can be taken as common. Or this is A sine theta. This is again QE sine A sine theta. So it is twice of A QE sine theta. Twice of QE A sine theta, QE A sine theta. It is twice of A QE sine theta. Now what is 2A? 2AQ. What is 2AQ? It is P. The torque equals to PE sine theta. This is the more appropriate way to find the torque. In this way, you are involving both the forces. Otherwise, previously I have told you, take one force. If you take one force here, I am taking one force F1, say for example, and F1 and F2 are both equal. Both are equal. So I can take F1 common, D1 plus D2, and this comes to be say couple D. So what is D here? D1 plus D2. In the previous figure, it was from here to here. This was D, which was D1 plus D2, previously called AC, the couple arm. This is the couple arm. So the other way is take either of the force and multiply it with the
couple arm. Here D is the couple arm. Or you can take these two forces separately and add the moment produced by both the forces, or the torque produced by both the forces. This is the torque produced by the first force, this is the torque produced by the second force. You can add them. Why we are adding it? Because both are in same orientation, anti-clockwise. That's why we are adding it. F1 D1 plus F2 D2. So here the expression for tau is PE sine theta. Now using, this is the scalar form, the magnitude of it. What will the direction? Same. If you are interested in vector form, what will be the vector form? Tau vector equals to, if it is PE sin theta, so sin theta हमारे cross product में होता है, it should be P cross E. See, P cross E. What's the direction of P cross E? It's same. P से E की तरफ, just sweep your hands, right hand, P से E की तरफ, and thumb gives the direction of torque. This is the direction of torque. This is the direction of tau 1, and again this is the direction of tau 2. Tau 1 and tau 2 both vectorially add to produce tau. Here it is. So this is the most appropriate way. The expression is the same. Tau equals to PE sine theta, and tau equals to P cross E. Again we have the same corollaries. If theta is 0, we have tau equals to 0. That is a stable equilibrium. And if theta is 90, the tau will be maximum. And if theta is 180, the tau will be 0, and that is the unstable equilibrium. This is another way to find the tau, and this is the most appropriate way. There is third way also, but I'm not telling you that way. Two ways are enough. So it is up to the choice of the students. They adopt any of the way, either this or this. This is more appropriate. Now, if the forces are not equal, as in the case in non-uniform field, अगर non-uniform field हो, तो forces equal नहीं होंगे, F1 और F2 equal नहीं होंगे. So then this will not work. This will work. You can have F1 D1 torque produced by this force plus torque produced by the other force. In some cases, you will find if this is a couple arm, so this is a couple arm, and this is the one force, and this is another force. Both forces are in the same direction. Then what happens? And this is the axis of rotation. Then what happens? Then we have to find torque produced by this and torque produced by this, and we have to subtract it. जो बड़ी force होगी उसका effect होगा. तो उस केस में हम tau 1 minus tau 2 करेंगे. अगर दोनों opposite direction में forces हैं, then we will write tau 1 plus tau 2. This is what I want to say about how to find tau. So it is advisable to the students to please adopt this method. This is applicable to both uniform field as well as non-uniform field. Tau produced by the first force plus tau produced by the second force. If both the torque are in the same sense of rotation or orientation. If it is anti-clockwise, both are anti-clockwise, take it positive. If both are clockwise, then also take positive. If one is anti-clockwise and another is clockwise, then take negative of it. And the torque will be because of the greater force. That's all what I want to teach you today. Thank you. Thank you very much.